Hello everyone, I am Yogita Kumbhare as Assistant Professor in Computer Science Applications Department from Technocrats TIT Group of Institution, Bhopal. Here we are going to be discuss about the memory management, which is the part of operating system, and we are going to be discuss about the paging and segmentation in the memory management. First of all, हम देखते हैं memory management क्या है. अकॉर्डिंग टू नेम आप इतना तो समझ सकते हैं कि जब पूरा का पूरा प्रोग्राम वर्क करता है एक सिस्टम पे तो उसमें जो मेमोरी पे पूरी की पूरी चीज़ें एक्सेस हो रही है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना. वाई वी नीड memory management is important in an operating system because it allows for efficient use of memory, supports multitasking and prevent conflicts between the processes. Operating system must efficiently manage limited physical memory RAM. Goal: maximum CPU utilization and allow multiple processes to run concurrently. इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? अर्ली methods required the contiguous memory blocks leading to the fragmentation, wastage of the memory space. The solution of this is non-contiguous allocation schemes where the paging, segmentation and segmented pages are attached. So here non-contiguous memory allocation is memory allocation technique where a process is allocated multiple blocks of memory at a different location in the main memory. The image below shows the main memory allocating storage to three processes P1, P2 and P3 using the non-contiguous memory allocation. Here the process P1 is a virtual address space जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास में जो डिफरेंट डिफरेंट जीरो से लेकर 7 तक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसे कि हम पेजेस कहते हैं. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पेजिंग एंड सेगमेंटेशन हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. तो यहाँ पर हम पेजेस को प्रोसेस को पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस में. और जब हम फिजिकल मेमोरी में आ जाते हैं फिजिकल मेमोरी में जब प्रोसेस डिवाइड होती है छोटे छोटे टुकड़ों में तो ये फ्रेम के फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है. जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो P1 प्रोसेस है वो फ्रेम वन में है और पेज वन जो है वो फ्रेम वन में है एंड पेज टू जो है फ्रेम टू में है. ऐसे ही यहाँ पर सेकेंडरी हार्ड डिस्क हमारे पास में शो की गई है जिसमें कि जिस पेज का भी हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा है मतलब प्रोसेस की जिस पेज का हमारे पास करंटली यूज़ नहीं हो रहा है वो उसमें स्टोर्ड है. जैसे P1 प्रोसेस में पेज 2 to 7 एंड P2 प्रोसेस में पेज 5 to 10 और 2 to 3. इनकी जब भी नीड होती है जिस पोजीशन पर नीड होती है एक साथ स्वैप करके प्रोसेस में इसका यूज़ कर लिया जाता है. पर प्रोसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. Process is divided into the pages and memory is divided into the frame part. Non-contiguous allocation involves the use of pointers to link the non-contiguous memory blocks allocated to a process. These pointers are used to keep track of the memory blocks allocated to the process and to locate them during the execution of the process. First one is paging. Paging is the process which is divided into the fixed size of block called the pages and the main memory or a memory is divided into the blocks of the same size called the frame. It breaks the processes into equal size pages and map them to the memory frame mainly to enlightenment of external fragmentation. Segmentation क्या है? It is divided process into the variable size logical segmentation like code, data, stacks. जब भी हम stacks में कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो वो एक वेरिएबल लॉजिकल फॉर्मेट में डिवाइडेड होता है supporting the protection, sharing and logical organization. Segmented paging, a hybrid technique that first divided process into the logical segmentation and then split each segment into the fixed size page and combining the benefits of the segmentation and the paging.
उसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि प्रोसेस P हमारे पास है 4 KB की है मेन मेमोरी में, टू फ्री स्लॉट्स इसके नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन के लिए प्रोवाइड किए जाने हैं और स्प्लिट करना है उसको 2 KB पार्ट्स में, जो कि इस टाइप से आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 KB का मेन मेमोरी में स्पेस है, प्रोसेस P के लिए यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, hence the filling the space in the main memory. And this example, process P can be divided into two parts, which is the equal parts, and hence one part of process P can be allocated to the first 2 KB space of main memory, and the other part of the process can be allocated to the second 2 KB space of main memory. That is dividing dynamically based on the changing of free space basis. So paging. Paging is another memory management scheme that allows or also permitted non-contiguous physical address space. In this, the main memory is divided into equal size partition. The partition of secondary memory are called the pages, while the partitions of the मेन मेमोरी आर कॉल्ड दी फ्रेम्स। जैसे कि अभी हमने just पहले डिस्कस किया कि पेजिंग को किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर जो सेम ब्लॉक्स पार्टीशन होगा वो मेमोरी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि पेजेस के लिए भी होगा और फ्रेम के लिए भी होगा। दे आर डिवाइडेड इनटू द इक्वल साइज पार्टीशन टू have maximum utilization of the main memory and hence avoid the external fragmentation। जैसे कि आप पूरा आपके पास में फिगर में प्रेजेंट है, ये लॉजिकल मेमोरी हार्ड डिस्क का स्पेस है वो यहाँ पर इक्वल पार्ट में डिवाइड है 0 1 2 3। जैसे हमने 4 KB का भी डिस्कशन किया था, तो यहाँ 4 पार्ट में 0 से लेकर पेजिंग 3 तक की डिवाइड है लॉजिकल मेमोरी पे, और फिजिकली मेमोरी में भी फ्रेमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। So the paging translation of logical address into the physical address. The logical address consists of two parts, pages number and page offset. Page number, it tells the exact page of the process which the CPU wants to access, and page offset, it is tells the exact word on that page which the CPU wants to read. The physical address consists of two parts, frame number and page offsets. First one is frame number. It tells the exact frame where the page is stored in the physical memory. And page offset, it tells the exact word on the page which the CPU wants to read. It requires no translation as the page's size is the same as the same frame size. So the place of the word which CPU wants access will not changes. So now the page table. A page table contains the frame number corresponding to the page number of specific process. So each process will be its own page table. A table register called the page table base register, which holds the block of the address. The idea behind the implementing paging is stored is a part of this program, which is used in the physical memory. Paging. When the process needs to access a part of the program, the OS will check the page table to see if the page is in the physical memory or not. If the page is in the physical memory, the CPU can directly access it. If not, a page fault occurs. If directly not accessed, then the page fault is occurred. So the operating system will load the page from the hard disk into the physical memory and update the page table, जैसे कि यहाँ पर फिगर में शो किया गया है। While loading a new page into the physical memory, if the space is full, the OS will be or operating system will be use a page replacement algorithm to decide which page to remove and make space for the new page in the RAM. So जो ये हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, उसको हम फर्दर आगे डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सो पेजिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. There is no external fragmentation. This is the advantage of the paging, as it
allows us to store the data in a non-continuous way, and swapping is easy between the equal size page framing. So this is the basic advantage we get. And this disadvantage of paging, as the size of the frame is fixed, so it may be suffer from the internal fragmentation. External fragmentation से तो हम बच गए, but यहाँ पर internal fragmentation create हो सकती है. The access times increases because of paging, as the main memory has to be now accessed 2 times. For every process, we have an independent process maintaining the page table or extra overhead. So, पेजिंग कंप्लीट हुआ. अब हमारा सेगमेंटेशन क्या कह रहा है कि सेगमेंटेशन इज एन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोज द प्रोग्रामर व्यू ऑफ memory that logical address space is divided into a collection of the segmentation. Segmentation permits the physical addresses space of a process to be contiguous. Each segment has a name and a length. The addresses specify both the segment name and the offset within the segments. For simple implementation, segments are numbered and are referred to by a segment number rather than by a segment name. Thus, a logical address consists of two tuples, segment number and segment offset. लॉजिकल व्यू सेगमेंटेशन में हम देख ही पा रहे हैं कि यूजर स्पेस किस तरीके से शो कर रहा है कि हमें सारी कुछ एक 1 2 3 4 जो सेगमेंटेशन है हमें सर्कुलर पार्ट में दिखाई दे रहे हैं और इसी को फिजिकली मेमोरी स्पेस में प्रॉपरली डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स के फॉर्मेट में. Feature of segmentation. The key feature of segmentation are a logical division of a memory. Segmentation represents the meaningful units like code, stack, data, and modules. Variable size division. Segmentation can have different length depending on the program's requirements. No internal fragmentation since the segmentation are not fixed in a size. External fragmentation can occur when free memory is divided into a small scattered blocks. Protection sharing. Different segments can have access the rights, read, write, and execute, and can be shared among the processes. Types of segmentation in the operating system is virtual memory segmentation and simple segmentation. So this is the segmentation part, and advantage of the segmentation is no internal fragmentation जो कि हमारी पेजिंग में क्रिएट हो रही थी. Segment table consume less space in comparison to page table in paging. And disadvantages, as processes are loaded and removed from the memory, the free memory space is broken into little pieces, causing external fragmentation. Here is the basic differences or key points of the difference of paging and segmentation. जैसे कि आप देख रहे हैं डिवीजन यूनिट को डिवाइड किया है पेजिंग में फिक्स साइज पेजेस के अंदर और सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज सेगमेंटेशन हो रहा है. मैनेज किया जा रहा है पेजिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और सेगमेंटेशन को कंपाइलर के थ्रू. यूनिट साइज डिटरमाइन किसके थ्रू किया जा रहा है पेजिंग में हार्डवेयर के थ्रू और सेगमेंटेशन में यूजर या फिर प्रोग्रामर के थ्रू. और एड्रेस स्ट्रक्चर पेज नंबर प्लस प्लेस ऑफसेट्स का यूज करके किया जा रहा है और यहाँ पर सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट्स के लिए. डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड पेज टेबल एंड सेगमेंट. फ्रेगमेंटेशन टाइप, यहाँ पर हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास में सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो रही है. स्पीड क्या है, पेजिंग की फास्टर है और सेगमेंटेशन की स्लोवर है. प्रोग्राम विजिबिलिटी is invisible to the user in the paging and the segmentation visible to the user. Sharing of paging is difficult but sharing of segmentation is very easy. So this is all shown in the here. प्रोटेक्शन, साइज कंस्ट्रेशन, डेटा स्ट्रक्चर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी डिफरेंस की पॉइंट्स में दिए गए हैं और ओवरऑल ये हमारा हो गया मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग एंड सेगमेंटेशन पार्ट. थैंक यू.